नहीं नहीं, आपके पास कुछ डाउट्स है तो बताइए। रिवाइज का क्या मतलब है, आप खुद तैयारी कर रहे होंगे ना। जी सर। हाँ तो डू यू हैव एनी डाउट्स। राइट राइट ना, अभी तो स्कूल से आए सर, अभी तो पढ़ेंगे थोड़ा सा फिर पूछेंगे। ठीक है तो लाइक मैं तो आई मैसेज विल कर सकता पोस्ट। हाँ यू कैन मैसेज ऑल्सो, लाइक आई विल पोस्ट अ लिंक। यू कैन ज्वाइन अराउंड, आई थिंक इट विल बी 8:30 एट योर बाय योर क्लॉक। वहाँ पे नहीं नहीं 7:30 आई थिंक। 4 to 6। इंडिया के 10 बजे ना। 10 p.m. IST। I will post a link हूँ। ओके and सर, तो हमारे साढ़े you can। 10 बजे, हम क्या? 7:30 बजे, 7:30 बजे हमारे। 7:30 बजे। ठीक है। 7:30 के से टाइमिंग राइट।
Try this and send the answer on my WhatsApp. Okay. You've done similar type of question in the last class also. No. Keep in mind there are only two equations. One is Q is equal to IT, and the other is Q is equal to the change in oxidation state into the number of moles. First of all, you will calculate how much mole is in 1.2 gram of magnesium. Okay, how much mole is present in 1.2 gram of magnesium, and then what you're going to write? You're going to write a reaction. What reaction is going to happen? If you're going to get magnesium, you're going to get magnesium from molten MgCl2. So molten MgCl2 में हमारे पास Mg कौन से state में रहेगा? Okay, and then you have to write the reaction. After you have done the reaction, you will determine the delta OS. Once you have determined the delta OS, you will get the Q in the terms of something like this, X Faraday. And then what they're asking, calculate the strength of current. That means they're asking about the I. Once you have got the Q in X Faraday, you will just do X into 96500 is equal to I times time. Now time here you have to keep in mind that it should be in terms of seconds. Okay? So time आपके पास 1 hour है. 1 hour means 1 hour has 60 minutes. It has 60 seconds. So I will be equal to X into 96500 divided by 60 into 60. 60 minutes 60 seconds. Yeah, this will be in terms of ampere. अब X क्या है आपका पास? X यही है आपका, delta OS into N. So you need only two things. You need to first of all determine the number of moles in 1.2 gram of Mg, and then you have to write the reaction, determine the delta OS. कम से कम दो चीज आप लोग हमको भेजिए, the number of moles and the reaction. Moles of Mg in 1.2 gram and just show me the reaction that is going to happen.
Yeah, that is correct. रिएक्शन नहीं आ रहा किसी को लिखने, आप तो घर में जाके रिवाइज ही नहीं करते हैं. रेज योर हैंड इफ यू आर सेंडिंग द आंसर्स. किसी ने कुछ भी किया है अगर तो प्लीज रेज योर हैंड. Send whatever you have done, Abdul Rahman. 3 मार्क्स के सवाल में 15 मिनट आप लोग लगाइएगा, कहाँ तो इंसाफ है. हाँ, 3 मार्क्स से ज्यादा का सवाल आएगा नहीं. लुक एट योर हर्डल्स. ठीक है, आपको प्रॉब्लम इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में नहीं है. इफ यू कैन नॉट गेट द ऑक्सीडेशन स्टेट देन आपको प्रॉब्लम रिडॉक्स रिएक्शन में है. पॉइंट आउट वेयर यू आर गेटिंग रॉन्ग एंड फिर वहां पे फोकस कीजिए. नंबर ऑफ मोल्स आपने निकाला. Zen, I'm looking at your answer, but I wonder आपको मार्क्स कभी मिलेगा कि नहीं, because like I cannot understand even one thing. Oh God. जीरो 0.2 0.1 क्या क्या लिखा हुआ है आपने. There is no flow. Oh God. थोड़ा सा ठीक से आप जैन लिखने की कोशिश कीजिए. कम से कम ये तो समझ में आया ना कि आप पहला स्टेप क्या है, सेकंड स्टेप क्या है. ओके अब्दुल रहमान, नंबर ऑफ मोल्स आपका ठीक है, रिएक्शन आपका हाँ ठीक है. ओके फाइन, ठीक है ठीक है. क्यू आपने निकाला है लेकिन भाई ठीक है, चलिए डेल्टा ओ एस इज इक्वल टू 2 इंटू हाँ ठीक है. चार्ज निकल गया. चार्ज के बाद आपको क्या निकालना है, एम्पेयर्स निकालने. हाँ, यू आर गोइंग राइट. रिएक्शन विल बी हियर Mg2 plus 2 electron going to give you Mg. Now what is the delta OS? It is equal to 2. Oxidation change in oxidation state is equal to 2. Moles of Mg will be equal to 1.2 divided by 24. This will be equal to how much? It will be 0.05 होगा I think. Yes, sir. Right. 1/20. Yeah. Sir, Q 0.05. 0.1. हाँ, Q 0.1 हो जाएगा. Delta OS into the number of moles. So delta OS is 2 into 0.05. This will be equal to 0.1. Now it is in Faraday. Now once we have got that, we can also write it as Q is equal to 0.1 into 96500 coulombs. Now this will be equal to Q. Now 0.1 will be 9650 coulombs. Now we have got the Q, or we also know that Q is equal to I into T. Now I will be equal to what? I will be equal to Q upon Q T. by 2. Q by T. हाँ. तो Q हो जाएगा आपके पास 9650 coulombs divided by 60 into 60 in seconds, right? Yes or no? Yes, sir. And coulombs per second is going to be your ampere. यहाँ पे आप कैलकुलेट कर लीजिए. 9650 divided by 2.6. 60 into 60 कितना आ रहा है?
2.6 sir. 2.6 amperes. Yeah, I think that's right. Zen, you are getting this answer 2.6. Yeah, yes, sir. So got 0.1 as आपने लेकिन नंबर ऑफ मोल्स में 0.2 0.1 कुछ तो ऐसे लिखा हुआ है ना, इस वजह से आई एम गेटिंग कंफ्यूज्ड देयर. If you see, so 1.2 divided by 24 ना. sorry, 1.2. 1.2 divided by 24 ना. हाँ, ये कितना आएगा? वो देखो वो 0.2 कुछ आया था. 0.2 नहीं आएगा. नहीं 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 जैन जैन जैन, इसकी वैल्यू कितनी होगी? हाउ मच दिस विल बी इक्वल टू? हाँ तो ये 1 मतलब ये 0.1 होना चाहिए ना. ये 0.1 होगा. नहीं 12 and 24 ऐसा अगर आप into 10 करें तो आपको 12 by 240 आता. हाँ ठीक है, बहुत सही. 12 by 240 आ रहा. फिर तो जब आप 12 से कटे 12 1 and then 12 2 are 24 ना. So 1 by 2 20. 1 by 20. बहुत सही. कितना आएगा ये? हाँ तो उसमें गलती हो गई. हाँ ठीक है, वही हम कह रहे थे. ध्यान से कीजिए, लाइक दे आर नॉट वेरी हार्ड टफ प्रॉब्लम्स. ठीक है. और दूसरी बात, आप लोगों को प्रैक्टिस करना चाहिए. वंस टू लास्ट क्लास के कितने प्रॉब्लम्स आप लोगों ने दोबारा किए बताइए तो जरा. कैन रेज योर हैंड इफ यू डिड रीड ऑल दोस प्रॉब्लम्स लास्ट टाइम, जो जो हम लोगों ने लिखाया था लास्ट क्लास में. हम लोग वी डिड अ प्लेंटी ऑफ क्वेश्चंस, राइट? आई थिंक मोस्ट ऑफ दोस वर क्वेश्चंस ओनली. बस लॉ स्टार्ट किया था हम लोगों ने ना. आपको नहीं, थोड़ा सा आपका इलेक्ट्रोड्स था. देन वी हैड फर्स्ट लॉ में हमारे पास बहुत सारे 1 2 3 4 5 6 7 8, like we had almost 8 questions there. Then one question of like same question solution, calculate the mass of CU deposit. वहाँ पे mass पूछा था, यहाँ पे उन्होंने I पूछा. सेम दो equations यहाँ पे भी यूज हो रहे हैं. Then we did another this question. It was a big question. At least if you would have read these questions ना, तो आप लोग को equations के बीच में खेलना आता. ठीक है, चलिए. Right, next, second law of electrolysis. Please write. When same charge is passing through different electron, is passing through different electrolytes, then the mass deposited at electrode is directly proportional to equivalent weight. It's directly proportional to equivalent weight. Okay, now this particular second law of electrolysis, it can be useful in some ways, but again, जो दो इक्वेशन है उससे सारे प्रॉब्लम्स हो जाएंगे. ठीक है. Now this is not going to help you in any of the problems, and also it does not have anything which is related to the numericals and all. You may see that the last problem that we did, of different cells, from here you can see that what is the difference here? The mass deposited, it is directly proportional to the equivalent mass. See here, the number of moles, and it is multiplied by its molar mass. Again, here also number of moles
right? And what do we have here? Here we have the here we have the molar mass. Okay. So, but if I look at the Ag part, in Ag part, the difference is that Ag is using 1 electron there. And that's why the half is not coming here. Okay. Now that's the only difference between Ag and अगर आपको देखिए अगर Ag के यहाँ पे देखिएगा how much charge is there, then you are saying just what 1.45 upon 108, right? And then for here I think यहाँ पे हम लोगों ने half miss किया हुआ है. There will be into half also यहाँ पे. Now since zinc is also using 2 electron, copper is also using 2 electron, this 2 is going to come in the denominator, and this part 6, like the molar mass divided by 2, that is going to be the equivalent weight of zinc and copper respectively. Okay, but again you don't need to have this knowledge of second law. Second law थोड़ा सा पुराना भी है, we don't use that much here because equivalent weight का जो concept है, and at that time the mole concept was not very rigorous. And when the mole concept was not very rigorous, people were more used to the masses of different elements. So they used to do each and every calculation, and the laws at that time also were made with the respect of the mass that they are going to use. Because if you're taking something in your spatula and you're putting something in the reaction, you're not thinking in terms of moles, you're thinking in terms of mass. Okay, that is where the second law of electrolysis was there. But right now the concept of mole is very much polished, so we can use the two equation for anything. Q is equal to IT and Q is equal to the delta OS and into the number of moles. Okay, second law of electrolysis not pretty much useful nowadays because mole का concept ज़्यादा हमारे पास अभी है. People now can think in terms of mole and they can calculate in terms of mole. Okay, so second law of electrolysis, you will just revise if they ask you like what is the second law of electrolysis. That's it. So you will just state this. When same charge is passing through different electrolytes, then the mass deposited at the electrode is directly proportional to the equivalent weight. For example, अगर हम बात करें Ag क्या, right? So Ag के पास जो equivalent weight होगा, that will be the molar mass of Ag divided by 1, because इसका जो Van 't Hoff factor होता है, Ag can give 1 electron. But same अगर हम बात करें copper कितना यहाँ पे deposit होगा, so it will be deposited the molar mass of copper divided by 2, because यहाँ पे क्या है आपके पास, यहाँ पे copper has the Van 't Hoff factor of 2. Similarly, if I talk about zinc में भी you will get molar mass of zinc divided by 2. If same amount of charge is passing, then the mass of Ag will be what? The mass of Ag, rather than I should say that the number of moles of Ag that will be deposited will be twice that of copper and zinc. Will be twice that of copper and zinc, because copper and zinc they require 2 electrons, but Ag it requires only 1 electron. That is the meaning of the second law of electrolysis. Okay, so the number of moles whatever is getting deposited for Ag and copper, number of moles of Ag will be twice the number of moles of copper. That's the only thing that you have to learn from here. You can also see this happening here. For example, if you calculate this one, mass of zinc, not rather mass of zinc, I should say the number of moles of zinc that will be there. So this is, I'm going to calculate this, the number of moles of zinc that is getting deposited. It is 1.45 divided by 108 into 0.5, right? Yeah, this is equal to how much moles? This is equal to 6.7 into 10 to the power minus 3 moles of zinc will be deposited. If I do the same thing with Ag, for Ag, I think we calculated the number of moles somewhere. Yeah, 1.45 upon 108. This will be equal to 0.0134. Okay, so you can see that 67.0067 multiplied by 2. This is equal to 0.0134. ठीक है, तो क्या मतलब जिंक जो आपके पास प्रोड्यूस हो रहा है, that is half of Ag. The number of moles of zinc, it will be what? Half of Ag. Okay, that's the meaning of the second law of electrolysis. It is directly proportional to the equivalent weight. Okay. Now after this, you will write the topic conductance. This is completely new topic. It does not have any relation with the previous topics. Please write conductance. Okay.
Now, there are two types of conductance. One conductance you must have learned earlier in your lower standard also, that is metallic conductance. Please write. There are two types of conductors. Number one, metallic conductor. Number two, electrolytic conductor. Now, let us write what are the differences between these two conductors. टॉपिक में कंडक्टेंस है, बट इन सब टॉपिक्स वी हैव few more. Like आज तो नहीं होगा complete. You will have one more class. Then only it will be completed. Please write. Metallic conductor. For metallic conductor, and next one is electrolytic conductor. Right, number one. In metallic conductor, the charge carriers are electrons, and the charge carrier here are the ions of electrolyte. Zn2 plus copper 2 plus, these are the charge carriers. Right, next. No chemical change. Now, if I run some electricity in copper wire, there is no change in chemical change in the copper wire. So no chemical change is seen when current is passed. When current is passed. But here we have seen that whenever there is electrolysis, it involves the decomposition of electrolytes when the current is passed. So please write, it involves decomposition of electrolytes when current is passed. Right, next. Does not involve transfer of mass. That means mass does not transfer if I am going to run any electricity from in a copper wire or something, aluminum wire. Okay, but in electrolytic conductor, what happens? Because the electrode, there are ions which are getting deposited in the electrode, we can say that there is a transfer of mass that is taking place. So here you are going to write it involves transfer of mass. Now, the last thing, conductance. What happens? It decreases or increases? Please, you will tell me for metallic conductor. For metallic conductor, conductance increases or decreases on increase in temperature.
You have to tell me for metallic conductor. What happens when we increase the temperature? Conductance increases or decreases? That is correct, Zan. It decreases. What will happen here? The reverse will happen. Now, because the charge carriers are ions, if I'm going to increase the temperature, the charge carrier will be moving much faster. If they're moving much fastly, then they are going to conduct more electricity. Like I can say that the conductance is going to increase. Conductance increases. On increase in temperature. Okay. Now let us revise a few things regarding conductance, conductivity, resistance, and these things. Okay. Please write conductance. What is conductance? What has happened to conductance? Okay. Conductance, it is represented by the uppercase G, which is the property of a substance which gives an idea about the ease of flow of current and is measured as reciprocal of resistance. It is measured as the reciprocal of resistance. So G is equal to 1 upon R. The unit of G is ohm inverse or mho or Siemens with a capital S. Okay, so 1 ohm inverse is equal to 1 mho. It is also equal to 1 Siemens. Right, next about conductivity. So can you scroll up? क्यों आप साथ साथ लिखिए ना, कुछ नई चीज तो नहीं है ना आप लोगों के लिए, साथ साथ लिखिए हमारे. Conductivity.
कंडक्टिविटी को रिप्रेजेंट करते हैं, इस केस इट इज नोन एज कापा. Sir, what is that third unit of conductance? Oh, sorry, it is Siemens. I've mistaken the spelling there. There will be N and then S. It is represented by capital S. Done, guys? चलिए यहाँ पे लिखिए conductivity kappa. What is conductivity? It is the reciprocal of resistivity. Okay, it is a reciprocal of resistivity. Kappa is equal to 1 upon rho. Now, relationships. Relationships. Okay, so one relationship I hope all of you know, that resistance R is equal to the resistivity into the length of the resistor upon A. That is the cross-sectional area. So I can write rho will be equal to R into A by L. Yes or no? Please tell me, guys. Yes, sir. Okay. Now we also know kappa is equal to what? Kappa is equal to 1 upon rho. If kappa is equal to 1 upon rho, I will just plug in this value of rho here. It will be 1 upon R into A by L. Okay, that's fine. That means it is equal to 1 upon R into L by A. What is this? This is kappa. Okay, and this is equal to 1 upon R is G, and L upon A is known as cell constant. Okay, and from here, what we are going to do also, going to derive the unit of kappa. Unit of kappa, like 1 upon R, that is conductance. So conductance will be in Siemens, and L will be in centimeter. Area of cross section will be in centimeter square. That means it will be what? Siemens per centimeter. Done, everyone? Is please tell me. सबने लिख लिया? Yes, sir. Okay, right. Next, a few things about the cell constant. Cell constant, it is equal to L upon A. The L, that is the length here, it is the separation between the two electrodes. And A is the cross-sectional area
of electrodes. Cross-sectional area of electrodes. Okay. Now, another point, cell constant is independent of concentration of solution. It doesn't matter if you're what the concentration is going to be, the cell constant is going to be the same if you have the same cell. Okay. Now we have kappa, and we saw that it is equal to the conductance into the cell constant, that is equal to L upon A. That is equal to L upon A. Now we want to define what is this conductivity, because it is a constant, Now, if I take a cell in which the length is equal to 1 and the area is also equal to 1 centimeter square, that means I will say that if I have something like, okay, who is here? Conductivity. Pata nahi. What time ho gaya Abdur Rahman? And also like my electricity chapter was not very good, so I don't remember much. Like in here it is represented as kappa. Abdur Rahman is saying that conductivity is represented as sigma. Is that right? In physics. हाँ तो 2 साइन है फिर, ठीक है. There are 2 signs. I need to increase the size here. Okay, so sigma, kappa and gamma, ठीक है, सब चीज से डिनोट किया जाता है. केमिस्ट्री में आपके इसमें kappa ही आएगा, ठीक है. So you will remember as kappa only. Okay, what I was saying is, please see, if I have a length that is equal to 1 centimeter and the area is equal to 1 centimeter square, the cross sectional area, then the volume occupied will be equal to what? Volume will be equal to, देखिए अगर आपके पास एक क्यूब होता है, okay, what is the area of this base here? This base area is a square, and the height here it is equal to a. Multiply both of these things, you will get the volume. So the base area times the height is going to give you the volume. And similarly here also it will be what? 1 into 1, and this will be centimeter cube. So 1 centimeter cube. Okay, so now if I put 1 here and 1 here, it will be equal to what? Kappa will be equal to G, that is conductance. Kappa will be equal to G, that is conductance, right? That means, what is conductivity? Conductivity is the conductance that is offered by unit volume of conductor. Okay, so please write the conductance offered by unit volume of conductor is called conductivity. Is called conductivity. Now from here we can see that if we have 1 centimeter
cube volume of solution. That means if you have 1 ml, then the conductance will be equal to conductivity. Please see here, guys. Please see for 1 centimeter cube, or we can say 1 ml, है ना, एक ही चीज है दोनों. Volume of solution. Conductance is equal to conductivity. If I will have 2 centimeter cube, then conductance will be equal to conductance of that particular solution will be equal to 2 times the conductivity. If I have 3 centimeter cube, it will be 3 times the conductivity. If I have 4 centimeter cube, it will be 4 times the conductivity. If I have, for example, for V centimeter cube volume of solution, conductance will be equal to the kappa, whatever the conductivity is, into V. Okay, so we can write a formula. Conductance is equal to kappa into the volume. Please remember the volume of solution. Here it is in centimeter cube or ml. V is equal to volume of solution in centimeter cube or ml. 1 centimeter cube is equal to 1 ml. Done, everyone? Yes or no? Please tell me. Is everyone done or not done? दिख रहे हैं अभी भी? Yes, sir. I think इतना ठीक है. ये सवाल लिखिए. You can calculate from इतने इन्फॉर्मेशन में आप क्या कैलकुलेट कर सकते हैं? मोलर कंडक्टिविटी इतनी पढ़ा अभी हम लोगों ने, अभी पढ़ेंगे. लेकिन यू कैन कैलकुलेट द रेजिस्टिविटी एंड कंडक्टिविटी. फिर उसके बाद जब मोलर कंडक्टिविटी पढ़ेंगे तो फिर मोलर कंडक्टिविटी भी कैलकुलेट करेंगे. राइट दिस क्वेश्चन. अभी तक देखिए कंसंट्रेशन का कुछ हम लोगों ने अभी तक यहाँ पे कोई रोल ही नहीं कंसंट्रेशन का. ठीक है. सो व्हाट यू नीड, यू जस्ट नीड दीज थिंग्स. 1 सेंटीमीटर लेंथ इज, diameter is 1 centimeter, length is this much, and the resistance is this much. ठीक है. तो आप सीधा क्या यूज कर सकते हैं? Resistance is equal to what? Rho into L by A. That means resistivity जो आपने यहाँ पे पूछा, that will be equal to 1 upon R into the area upon the length. तो आपको एरिया निकालना पड़ेगा बस, है ना. लेंथ आपको दिया हुआ है, रेजिस्टिविटी भी यहाँ पे, सॉरी रेजिस्टेंस दिया हुआ है, रो निकल जाएगा. अब जब रो निकल जाएगा तो फिर कापा निकाल लीजिएगा. कंडक्टिविटी विल बी इक्वल टू 1 अपॉन रो. जल्दी से कैलकुलेट कर बताइए आंसर कितना आ रहा है. फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैलकुलेट द एरिया. ध्यान रखिएगा ये डायमीटर है, रेडियस नहीं है. पहले रेडियस निकालिए इसका एंड कीप इट इन फ्रैक्शन. जहां तक हो सके उसको फ्रैक्शन में रखिएगा. बिल्कुल आखिरी में जाके उसको सॉल्व कीजिएगा. ओके. पाई आर स्क्वायर में अभी उसको क्या रखिएगा, इसका डायमीटर का रेडियस कितना हो जाएगा 0.5. तो 0.5 ना लिख के आप उसको हाफ लिखिएगा, 1/2 का स्क्वायर. ठीक है. तो जितना हो सके फ्रैक्शन में रखिए, आखिरी में जाके काटिएगा, आखिरी में जाके डेसिमल में कन्वर्ट कीजिएगा.
Okay, what is that by the way, Abdur Rahman? Sir, resistivity. रेजिस्टिविटी निकला है आपका वो 10 क्या है 10 to the power -5 नहीं नहीं सही नहीं है अब्दुल रहमान आप हमको भेजिएगा कैसे किया आपने रेजिस्टिविटी जैन आपके डेसिमल्स में कुछ दिक्कत हो गई है नंबर्स सही हैं जैन डेसिमल्स में आपकी दिक्कत है कुछ ओके एरिया नहीं मीटर क्यों कर दिया आपने अब्दुल रहमान हाँ अब्दुल रहमान सारी चीजें सेंटीमीटर में है ओके मीटर में कुछ नहीं है ठीक है और एक बार तो आप 10 बार प्रैक्टिस कीजिए रो लिखने का पता नहीं आप रो हाँ नहीं रो आपने ठीक लिखा 2 लिखा है आपने वैसे कुछ अजीब सा ओ गॉड सर सेंटीमीटर में करना है सर. सब 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 एवरीथिंग इज इन सेंटीमीटर ओके सर. एक सेकंड जस्ट अ सेकंड ये आई थिंक दिस इज नॉट राइट ना दिस विल बी r into a by l r into होगा ना हाँ दिस विल बी r into a by l ठीक है I think ऊपर में हमने कुछ गलती लिखा है क्या नहीं नहीं सही दिस विल बी r into a by l एरिया आपको उतना आ रहा है हमने तो आपको बोला था ना डेसिमल में नहीं करने के लिए उसको फ्रैक्शन में रखने के लिए 0 पॉइंट आ रहा है कुछ आई थिंक दैट इज फाइन सही है दैट इज फाइन लेकिन ट्राई कीजिए कि उसको आप इसमें रखिए हमेशा फ्रैक्शन में ही रखिए आई थिंक इसकी वजह से आपको कुछ मिस्टेक हो रहा होगा प्लीज रीड द प्रॉब्लम अब्दुल रहमान L is equal to 50 centimeter and the radius will be equal to 1 by 2 centimeter. So the area will be equal to pi r square, which is 22 by 7 multiplied by r square is 1 by 2 whole square. So this will be equal to 22 by 7 into 1 by 4. So this will be equal to what? 11 because 2 11s are and 2 2s are. 11 7 2s are 14. Okay, so 11 upon 14 centimeter square is your area. Now we just need to calculate what rho. Rho is equal to resistance. Resistance is given as how much? 5.55 into 10 to the power 3 ohm into the area is 11 by 40, 11 by 14 centimeter cube, and then we have the L length is equal to कितना 50 सेंटीमीटर. सो यहाँ से तो बिल्कुल आपके पास रेजिस्टिविटी कितना आ जाएगा ओम सेंटीमीटर स्क्वायर राइट हाँ ओम सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा नहीं ये सेंटीमीटर स्क्वायर होगा ना सॉरी पर सेंटीमीटर सेंटीमीटर क्यूब नहीं होगा मेरा सेंटीमीटर स्क्वायर होगा एंड दिस विल बी ओम सेंटीमीटर you have to calculate this term 5.55 into 10 to the power minus 3 divided by 14 into 50
So what about 11? Sir 11 कहाँ चले गया? 11 मिस कर दिया क्या हमने? हाँ 11 भी होगा, माय बैड। $55.55, sorry 5.55, not 55.55. टेन टू दी पावर 3 वैसे नहीं कैलकुलेट करते हैं। एक दूसरी चीज हमने हमेशा कहा है आपसे, 2 डेसिमल पॉइंट आफ्टर द 2 नॉन जीरो डिजिट्स आफ्टर द डेसिमल पॉइंट। ये बहुत ही आसान कैलकुलेशन, इसमें आप लोगों को इतना टाइम क्यों लग रहा है? आई डोंट नो। इंटू 11 बस यहाँ पर रहेगा, इंटू 11 रहेगा। बताइए हाउ मच? 7 7 are right. हाँ दैट इज करेक्ट। द आंसर आएगा आपका 87.2 ओम सेंटीमीटर। डेसिमल्स में प्लीज कभी मत जाइए, बिल्कुल आखिरी में आप लोग डेसिमल में जाया कीजिए, ठीक है? जितना हो सके फ्रैक्शंस में ही रहिए। kappa will be 1 upon rho, kappa will be equal to 1 upon rho, कितना हो जाएगा? 1 upon 87.2 ohm inverse centimeter inverse. What will be the value of this number? 1 upon 87.2, 0.0114 है, तो ठीक है। सीमेंस पर सेंटीमीटर है ना? Right, next, molar conductivity. Molar conductivity, it is also known as molar conductance. It is represented by either lambda m, the lowercase lambda, or by the uppercase lambda. Okay. Right, the conducting power. The conducting power of ions produced by one mole of electrolyte in a given volume of solution, is called molar conductance. Okay. Now answer me this. If I say that, let's suppose if a solution has concentration of 2 moles per liter.
How many moles per liter? 2 moles per liter. What does that mean? It means there will be 2 moles in 1 liter, right? There will be 2 moles in 1 liter. Then if I ask how much volume is occupied by 1 mole of electrolyte, बताइए 1 मोल कितने वॉल्यूम में होगा? अगर 2 मोल है 1 लीटर में, तो 1 मोल कितने लीटर में होगा? 1 mole will be in how many liters? Tell me, guys. No answers. यूनिटरी मेथड है भाई मेरे, प्लीज थोड़ा सा दिमाग लगा के बताइए। 1 मोल कितने लीटर में होगा? 2. 2.5. समायरा कितना? समायरा, what was your answer? 0.5. And Fahad, what was your answer? 2. 2. Let us suppose we are saying that there are ऐसे करते हैं इसको, there are 2 kgs of anything. Let us say what 2 kg of what? 2 kg of dates in 1 packet. 1 kg डेट कितने पैकेट में होगा? 1 kg खजूर कितने पैकेट में होगा फहद? 2 पैकेट में। हाँ फहद? नहीं सर, नहीं, क्यों बताइए? 1 मोल कितने लीटर में होगा? यस फहद, 1 मोल कितने लीटर में होगा? अरे अच्छा ठीक है, ये हाँ बताइए बताइए, शांत हो जाते हैं बिल्कुल। आवाज ही नहीं आ रही है आपकी। बाकी कोई बताइए, टेल मी गाइस, 1 mole will be in how many liters? 1 mole will be in how many liters? वो आंसर कीजिए या फिर ये आंसर कर लीजिए, 1 किलो खजूर कितने पैकेट में होगा? 1 kg of dates will be in how many packets? अरे भाई मतलब कहाँ छोड़ के आ गए क्या दिमाग आप लोग कहीं पे? हाँ जैन बताइए। 0.5. आधे में होगा है ना? ठीक है, वेरी गुड। आई होप सबका आंसर अब यही होगा। खजूर देख के, खाने की चीज देख के दिमाग चलने लगता है आई थिंक सबका। ठीक है, तो यहाँ पे वी कैन राइट 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट विल बी इन 1/2 liters। ठीक है, अच्छा इफ आई से फॉर एग्जांपल इफ आई हैव लेट अस सपोज 4 मोल्स पर लीटर, सोल्यूशन का कंसंट्रेशन क्या है? 4 मोल्स पर लीटर। ठीक है, तो 1 मोल विल बी इन हाउ मेनी लीटर्स? 1/4। यस और नो? सही है? All if you Yes. agree with this, yes or no? Yes sir, yes. Similarly, if I have let us say 15 moles per liter, or let's say 0.1 moles per liter, तो 1 मोल कितने में होगा? It will be in 1/0.1 liters। yes or no? सही है? जी सर सही है। ठीक है, तो यहाँ हम ये कह सकते हैं that volume occupied by 1 mole is equal to, now since we are doing everything in centimeter, so I will not write this। ये एक कहाँ से आ रहा है आपका? this is for 1 liter है ना, तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? 1000 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, ये 1000 किसके लिए? सेंटीमीटर क्यूब के लिए, डिवाइड बाय द मोलारिटी। ठीक है, डिवाइड बाय द मोलारिटी। वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 1 मोल इज इक्वल टू 1000 डिवाइड बाय मोलारिटी। दिस विल बी इन व्हाट? हम लोग को यहाँ पे आंसर किसमें मिलेगा? सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा। ओके, we'll get the answer in centimeter cube, and we know that the conductance is equal to kappa into the complete volume, kappa into the complete volume. Okay, and the molar conductivity or molar conductance will be what? It is the conductivity of that is given by 1 mole.
तो कंडक्टिविटी गिवन बाय 1 मोल, और 1 मोल कितना वॉल्यूम यूज करता है? यूज करता है 1000 डिवाइड बाय द मोलारिटी। ओके, सो दिस इज द फॉर्मूला फॉर योर मोलर कंडक्टेंस। 1000 अपॉन m क्या बता रहा है आपको? इट इज गिविंग यू द वॉल्यूम इन विच 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रोलाइट इज प्रेजेंट। प्लीज राइट दिस डाउन। 1000 को वहां पे प्लग इन किया है हम लोगों ने बिकॉज ओनली एंड ओनली फॉर द सेंटीमीटर्स। यूनिट, अगर यूनिट की बात करें हम, देखिए लैम्डा m इज इक्वल टू कापा इंटू 1000। 1000 का यूनिट जो होता है ना, दैट इज सेंटीमीटर क्यूब एंड लीटर इनवर्स। क्योंकि यहाँ पे आई डोंट वांट टू मल्टीप्लाई एनीथिंग, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग 1 हियर। ओके, तो 1 कहीं भी मल्टीप्लाई कर सकते हैं। दैट इज 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय लीटर, क्या हो जाएगा? एक ही है, सेम थिंग्स, राइट? 1000 सेंटीमीटर क्यूब डिवाइड बाय लीटर, दिस इज इक्वल टू 1 बिकॉज ये भी आपका लीटर ही है, एंड वी हैव डिवाइड बाय मोलारिटी, राइट? ओके, यहाँ कापा का जो यूनिट होता है दैट इज सीमेन पर सेंटीमीटर। मोलारिटी का यूनिट क्या होता है? मोल्स पर लीटर इनटू व्हाट वी हैव, यहाँ पे यूनिट क्या है आपके पास? सेंटीमीटर क्यूब लीटर इनवर्स। तो लीटर इनवर्स एक दूसरे से कैंसिल हो जाएगा। सेंटीमीटर क्यूब है, यहाँ सेंटीमीटर इनवर्स है, दिस विल बी इक्वल टू व्हाट? सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। दिस इज द यूनिट ऑफ मोलर कंडक्टेंस और मोलर कंडक्टिविटी। सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। Done everyone? Yes or no, please tell me. Also, नहीं हुआ है? ठीक है। ओके, सो ऑल सब लोग प्लीज ध्यान से सुनिए। अप्रोक्सीमेटली 7:30 PM, okay, I will take doubt class. Okay, I will take डाउट क्लास बिकॉज मोस्ट ऑफ द बैचेस के जो मेरे स्टूडेंट्स हैं सबका कल एग्जाम है। दमाम के बच्चों का शायद कल एग्जाम है ना, तो आई विल टेक अ डाउट क्लास अप्रोक्सीमेटली 7:30 PM KSA, which will correspond to 10 PM IST। ठीक है, आप लोग डाउट लेके आइएगा। रिवीजन अभी अभी रिवीजन नहीं, हम एक दिन में आधे घंटे में क्या रिवाइज कराएं आप लोगों को, दैट इज वो कभी यूज का नहीं होगा। ठीक है, अगर आप लोग के पास डाउट नहीं है तो खुद से आप लोग अपना रिवाइज कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी के जो सवाल है उन सवालों को बनाइए, है ना। मतलब यहाँ पे आप तो ये मतलब है कि आप नर्सरी के बच्चे की तरह हम आपको सवाल देंगे फिर आप सवाल कीजिएगा, वो नहीं करना है। ठीक है, खुद से बैठिए, सवाल कीजिए। जो डाउट्स अगर हैं, अगर आपके पास, आपने अभी तक पढ़ा होगा, आई होप सो, ठीक है, या फिर अभी क्लास के बाद आप पढ़ना चालू कर दीजिए। यू विल हैव समवेयर अराउंड 2 hours, राइट? उस 2 घंटे के अंदर आपके पास जो डाउट्स आएगा वो 7:30 को आके पूछेगा। ठीक है, और ऐसे नहीं होता है कि एक दिन पहले आपको हम रिवीजन में क्या है, रिवीजन में हम फिर से दोबारा थोड़ी ना पढ़ाने लगेंगे, और वो भी आज के लिए। जब आपका सारा सिलेबस कंप्लीट हो जाएगा तो उस वक्त हम फिर जब रिवीजन कराएंगे तब सारे पूरा चैप्टर जो है एक एक करके रिवाइज कराते जाएंगे आप लोगों को। ठीक है, अभी नहीं लेके। जिनके पास डाउट्स नहीं है उन्होंने कुछ नहीं पढ़ा यानी कि, ठीक है, एटलीस्ट कंसेप्चुअल डाउट या फिर कम से कम एक न्यूमेरिकल कुछ ऐसा हो जो समझ में नहीं आया हो। क्योंकि देखिए आंसर्स का तो हमको पता है, आंसर्स आप लोग को मिल जाएंगे हर एक न्यूमेरिकल का, चाहे वो कोई भी न्यूमेरिकल हो, आंसर आपको मिल जाएगा, है ना। या तो आप नेट से देखिएगा, या तो अगर आपके पास कोई गाइड होगा तो गाइड से देखिएगा। लेकिन आंसर समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, या फिर एक सवाल देख रहे हैं उसका आंसर आपने देख लिया तो ओ हो हम तो यहाँ मिस्टेक कर रहे थे, चलिए ठीक है अब मिस्टेक नहीं होगा, अगला सवाल भी है, अगले सवाल में फिर कहीं फंस गए, अगले सवाल में फिर कहीं फंस गए। अगर उस तरह की कुछ चीजें हो रही है तो वो लेके आइए आप लोग। ठीक है,
चलिए अब हो गया होगा सबका। अरे क्लास खत्म नहीं हुई है, ठीक है, कोई भागेगा नहीं। यहाँ पे हम लोगों ने देखा था एक सवाल जिसने मोलर कंडक्टिविटी निकालनी थी, राइट? सो वी हैड टू कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी आल्सो। सो व्हाट वाज द रेजिस्टिविटी? अच्छा रेजिस्टिविटी छोड़िए, कंडक्टिविटी क्या निकला था कापा हमारे पास? कापा वाज इक्वल टू 0.011 ना, कुछ ऐसा ही था, 0.011। 0.011. व्हाट वाज द यूनिट? यूनिट क्या था? यूनिट बताइए, जल्दी बताइए, क्या हो गया? S centimeter inverse. सेंटीमीटर इनवर्स? जी नहीं, सेंटीमीटर इनवर्स नहीं है कापा का यूनिट। एटलीस्ट वो टॉपिक पे तो चले जाइए, देखिए कापा का यूनिट क्या होता है, टॉपिक पे जाके देख लीजिए, कम से कम नहीं याद आ रहा तो। सीमेंस पर सेंटीमीटर, ठीक है। एंड व्हाट इज लैम्डा एम? मोलर कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इनटू 1000 डिवाइडेड बाय By M. By M. द मोलारिटी। So, यहाँ पे कापा है आपके पास 0.011 into 1000 divided by what is the molarity here? 0.05। 0.05। अब जितने भी नंबर्स है ना उनको आप डेसिमल हटाइए, ठीक है। डेसिमल में कोई कंफर्टेबल नहीं होता, ना हम ना आप। डेसिमल हटाइएगा तो यहाँ पे विल बी इक्वल टू व्हाट? 11। 11 हो जाएगा ना, ये सही है? यस और नो? 11 हो जाएगा ना ये? हाँ ठीक है। इनटू 1000 चला गया, खत्म हो गया, 1000 इज गॉन, डिवाइड बाई व्हाट डू वी हैव? 5 into 10 to the power -2। That means this will be equal to 11 into 100 divided by 5। जल्दी बताइए आंसर कितना आ जाएगा इसका? हाँ बस सही है, 220। यूनिट ध्यान रखिएगा, यूनिट क्या होगा इसका? यूनिट होगा इसका सीमेन सेंटीमीटर स्क्वायर पर मोल। All of you done? Yes or no? Please tell me. Done everyone? Yes, sir. Now लिखिए factors affecting molar conductance। Factors affecting molar conductance। Number 1, nature of electrolyte। ठीक है, साथ साथ लिखते जाइए, समझ में आता रहेगा आप लोगों को, ठीक है। प्लीज राइट द मोलर कंडक्टेंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कभी कभी हम इसको ऐसे ही लिख देंगे, ठीक है। इज हायर दैन weak electrolyte। Higher than weak electrolyte because the strong electrolyte dissociates completely। जब ये completely dissociate होगा ions में, that means strong electrolyte is going to give you more number of ions per mole। ठीक है, अगर आप 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट लीजिएगा, वीक और स्ट्रॉन्ग दोनों ही, तो इन वीक इलेक्ट्रोलाइट दे विल नॉट डिसोसिएट, सो दे विल नॉट गिव यू आयन। इफ दे आर नॉट गिविंग यू आयन, देन कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी? लो हो जाएगी। बट इसमें क्या है, when you are having strong electrolyte, they will completely dissociate and they will also give you higher molar conductance। Right, next, size of ion। जितना छोटा साइज उतनी तेज से वो भागेगा इधर उधर, राइट। सो स्मॉलर द साइज ऑफ आयन, ग्रेटर विल बी आयनिक मोबिलिटी एंड हायर molar conductance। Please write smaller the size of sorry, smaller the size of ion,
greater is the ionic mobility. And higher lambda m. Third point, temperature. The interionic interaction. The interionic interaction decreases with increase in temperature. Okay, so दो ions एक दूसरे से उतना बात नहीं करते हैं ना. They will not be talking too much if you are having what? High temperature. And if they are not talking too much, that means they are moving very fastly, due to which increase in temperature, due to which ionic mobility increases and molar conductivity also increases. Right, the fourth one, which is very important. और थोड़ा इसको समझने की कोशिश कीजिएगा. Concentration. Concentration. Okay, so please write, when the solution is diluted, that means concentration क्या हो रही है? Decrease हो रही है. Then the molar conductivity of electrolytes increases because with dilution dissociation of electrolytes increases. और ये चीज आपको फॉर्मूले में भी दिख रही होगी. See, lambda m is equal to what? Kappa into 1000 divided by molarity. Molarity क्या है? वो concentration है. यहाँ पे बिल्कुल आपको साफ साफ दिख रहा होगा that molar conductivity is inversely proportional to concentration and molar conductivity is directly proportional to dilution. It is a bit counterintuitive, but you can see that why it is happening. You can also look at the formula. Right, next, infinite dilution. This means the solution is so dilute that the molar conductance or molar conductivity attains a maximum value. ठीक है, मतलब हमने इतना डाइल्यूट कर दिया, इतना ज्यादा डाइल्यूट कर दिया that it has attained the maximum value. यानी कि वो लिमिट है मोलर कंडक्टिविटी की, उससे ज्यादा मोलर कंडक्टिविटी हो नहीं सकती है. राइट, दैट इज द limit of molar conductivity. So lambda m attains a maximum value, or we can also say limiting value, and it does not increase with further dilution. Okay, now write a note.
when solution is diluted, number of ions per unit volume decreases. Hence, conductivity मतलब क्या है? कापा. Conductivity of solution decreases. That means conductivity is what? Directly proportional to concentration, and it is inversely proportional to dilution. Proportional sign लगा लीजिएगा. Dilution. So conductivity, it depends on the number of ions that is present in a particular volume. इतने volume में कितना number of ions है? If I have more concentration, the number of ions will be increased in this particular volume. And if I have less concentration, then the number of ions will be less. And as the number of ions is going to increase and decrease, the conductivity is also going to increase and decrease. Okay, so please remember, in conductivity, what is constant? आपको इतना ही volume चाहिए. ठीक है? इसके अंदर जितने ions आ गए आपके पास, इसके अंदर जितने भी ions आ गए आपके पास, that will determine the conductivity. But remember, in molar conductance, what happens? What is constant? 1 mole. अब ये 1 मोल तो आपका कांस्टेंट है. अब ये 1 मोल जितना ज्यादा वॉल्यूम लेगा, ओके, सो इफ इट इज हैविंग लोअर कंसंट्रेशन, अगर लोअर कंसंट्रेशन तो वॉल्यूम कम लेगा. वॉल्यूम कम लेगा तो आपको पता है कि कंडक्टेंस क्या होता है? कापा इनटू वॉल्यूम. और अगर आपके पास कंसंट्रेशन कम है तो 1 मोल ज्यादा वॉल्यूम लेगा, और अगर ज्यादा वॉल्यूम लेगा तो लैम्डा एन क्या हो जाएगा? हाई हो जाएगा. ओके, सो कंडक्टिविटी is directly proportional to concentration, inversely proportional to dilution. But molar conductivity is inversely proportional to concentration, directly proportional to dilution. Okay. So at this point, I'm ending the class. There is one point that is the independent Colrosh law of independent migration. That is one topic. आप लोग जब अगर क्लास के बाद आइएगा ना, 2 घंटे के बाद जब आइएगा यहाँ पे, उस वक्त अगर आप लोग के पास कोई डाउट्स होंगे नहीं, तो फिर आई विल